Students, yesterday we talked about distance and displacement. As we have discussed that what is distance? Distance is the total path object travels. कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पाथ ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. And it is the scalar quantity because it needs only number, it needs only magnitude for representation. For example, 10 kilometer, 20 kilometer distance traveled by an object. Then we discuss the displacement. Displacement is what? Displacement is the distance between the ending and starting position. Ending position को बोलते हैं हम final point और starting position को क्या बोलते हैं? Initial point. But along with the direction you have to mention in which direction object is going. किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. ये हमने सारा कल डिस्कस किया था. इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक डेल्टा एक्स. मतलब क्या होता है? इट इज़ पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस initial position. For example, you are moving 10 kilometer but in which direction? North direction. If you mention 10 kilometer in north, then it will be displacement. If you say only 10 kilometer, then it will be distance. So let us discuss the numericals based upon this. First example, that a person moves A to B and C as shown in figure. फिगर में दिखाया है कि एक पर्सन A से चलता है B 6 मीटर, then it goes to C 8 मीटर. Find the distance and displacement. So distance will be what? Actual path, total path. Distance is AB, सिंपल ऐड करेंगे AB प्लस AC 8 प्लस 6 14 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारी AC. तो AC हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपका क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल. पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको? हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते थे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 10 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 10 मीटर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करके देखेंगे. Now, next numerical on distance and displacement. A particle starts at A and reaches to B moving in a circular path of radius 7 meter. Calculate the distance and displacement. This is from A, circular path. A particle starts from A moving in a circular path, reaches at B. So A is the initial position and B is the final position. And this is the center of the circle and radius is given to us how much? 7 meter. So distance क्या होती है? Path covered. अब कौन सा पाथ ले रहा है ऑब्जेक्ट? सर्कुलर पाथ. सो रेडियस हमारा सर्कल का क्या है? 7 मीटर. तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी? टोटल सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr. अब ये हमारा ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की? हाफ सर्कल. तो क्या फॉर्मूला होगा? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की? πr. सो पाई इज़ 22/7 और r कितना है हमारा? 7. तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 वी आर गेटिंग 22 मीटर. How much distance the object has traveled? That is equal to 22 meter. And what about the displacement? Displacement हमारी क्या है? Distance between initial shortest path between initial point and final point.
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है? दैट इज 7 plus 7, that is equal to 14 meter. So in this case the distance is 22 meter and displacement is 14 meter. The next example, suppose in this case a particle starts from A and walks along the circular track and reaches back again to A. Then calculate the distance. तो distance हमारी क्या होगी? The circumference of complete whole circle. तो circumference of circle का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr. तो हमारा रेडियस कितना है? 7 मीटर. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2πr. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इट विल बी 44. और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0. जहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो वहीं पर आप एंड करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है? रिजल्ट क्या है? वहीं के वहीं खड़े हो. इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है. देन इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, देन द डिस्प्लेसमेंट इज 0. Example is, a person walks 20 meter towards east, then 20 meter towards north, the 20 meter towards east. Calculate distance and displacement. These are the direction. This is east and this is west, this is north and this is south. A person is starting from A. A से start किया, कितना जा रहा है? 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट. तो वो A से B की ओर, ईस्ट की ओर कितना गया? 20 मीटर. देन 20 मीटर B से नॉर्थ की ओर C की तरफ कितना गया? 20 मीटर. देन उसके बाद C से नॉर्थ से वेस्ट की ओर D की डायरेक्शन में कितना गया? 20 मीटर. इनिशियल पॉइंट उसका क्या था? A और फाइनल पॉइंट उसका क्या है? D. तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 AB, A से B की ओर गया AB प्लस BC प्लस CD, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड D. और A और D के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 20 मीटर. कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल? सेम भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं. सपोज अ पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड रीचेस एट पॉइंट Q 7 meter. So distance is equal to PQ 7 meter. And displacement, initial point is P, final point is Q. In the same direction means it is not returning back. So displacement will be from P to Q, that is equal to 7 meter. When magnitude of distance is equal to magnitude of displacement. So distance and displacement are equal. Article is from your NCRT, that is, Jack starts from his house and travels 12 meter towards east and then 5 meter towards north. Find the displacement and distance covered. Now see the figure that Jack is starting from A, 12 meter towards east, A to B, that is 12 meter. Then he moves 5 meter towards north, that is from B to C 5 meter, and its final position is C, initial position is A. So distance traveled will be, that is 12 plus 5, how much? That is AB plus BC, that is equal to 17 meter. But for displacement we have to calculate the distance between A and C, the shortest path, the shortest distance between
initial position and final position. So in this figure, this is a right angle triangle. You know, this is base, this is perpendicular, and this is hypotenuse. So if we have to calculate hypotenuse, which theorem we apply? That is Pythagoras theorem. That is equal to AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square क्या है हमारा 12 square plus 5 square. So when you will simplify, you will be getting AC square is equal to 169, and then you will take square root. So AC will be 13 meter. So distance will be 17 meter and displacement will be 13 meter. Like this way you have to simplify numericals. Is the NCERT question of back exercise. First question of the back exercise. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So let us see. This is a circular track. A person start or athlete starts from this point. यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया. इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है 100 मीटर, बिकॉज वी आर गिवन डायामीटर 200 मीटर. सो रेडियस विल बी डायामीटर अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर. वन राउंड को कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड. और हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट. टोटल टाइम दिया है कितना? हाउ मच टाइम इज़ गिवन? 2 minutes 20 seconds. सो वी विल कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स. तो 2 into 60 120 plus 20 दैट इज इक्वल टू 140 seconds. तो टोटल टाइम कितना हो गया? 140 seconds. सो लेट अस डिस्कस. इसने यहाँ से चलना शुरू किया. फर्स्ट राउंड पूरा किया 40 सेकेंड्स में. 40 सेकेंड्स में फर्स्ट राउंड पूरा किया. सेकेंड राउंड पूरा किया 80 सेकेंड्स में. थर्ड राउंड पूरा किया 120 सेकेंड्स में. देन ही हैज़ लेफ्ट 20 seconds, so he will reach half of the circle. Finally he reach at this point. So this is the final position. So first of all, should we discuss the displacement? Displacement हमारी क्या होती है? The distance between initial position and final position. तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है? दैट इज इक्वल टू डायामीटर, दैट इज इक्वल टू 200 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड is equal to 2 twice the radius, that is equal to 200 meter. Now calculate the distance. Distance हमारी क्या है? उसने कितने राउंड कवर किए हैं? 1 राउंड 40 सेकेंड, 2 राउंड 80 seconds, 3 राउंड 120 seconds, and in 140 seconds 3.5 राउंड्स. कितने राउंड्स उसने कंप्लीट किए? 3.5 round. Distance covered in one round, that is equal to the circumference of the circle, that is equal to 2 pi r. 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by radius r, and distance covered in 3.5 rounds is equal to 3.5 multiplied by 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 100. When you simplify this, you will get the answer. Distance covered is equal to 2200 meter. So this is about the numerical related with the distance and displacement.